बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स जो एमसीक्यूज हैं जो जनरल बायोकेमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम उन बेसिक्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो पहला एमसीक्यूज है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑप्शन 1 एन इलेक्ट्रॉन, अ मॉलिक्यूल, एन एटम और ए प्रोटॉन। सो हम जानते हैं कि द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द बेस्ट आंसर अमंग्स्ट दिस इज एन एटम। द यूनिट ऑफ मैटर इज एन एटम. The charge of a proton is exactly balanced by the charge of an option 1 negative, positive or electron, option B is positive, neutral or neutron, option C positive, negative and electron, and option D is neutral, negative or electron. As we know, the charge on the proton is positive, so it is balanced by the charge on the electron that is negative. So option C is the correct. Charge of the proton is positive, that is balanced by the negative charge that is on the electron. In what type of chemical reactions are the products of water removed during the formation of covalent bonds? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब मोनोमर आपस में यूनाइट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो पॉलीमर बनते हैं। तो उस दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस होता है, so it is also called the condensation reaction. So what is the best answer? It is the hydrolysis? No. It is ionization? No. It is dehydration synthesis? It is a decomposition. So it is a dehydration synthesis is the best answer, because during the condensation process water molecule is released and a polymer is formed, either it is a peptide bond or the glycosidic bond. MCQ number 4. Assume E. coli bacteria are grown in a nutrient medium containing the radioisotopes, that is 16N. After 48-hour incubation period, the 16N would most likely be found in the E. coli. अगर आप ई कोलाई को ऐसे मीडिया पे ग्रो करते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन सोर्स है वो 16N है, तो जब हम 48 घंटों के बाद जब हम उसकी कॉलोनीज देखेंगे, 48 घंटे की इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसकी कॉलोनीज देखेंगे, तो ये जो 16N है, जो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर और नन ऑफ दिस. सो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, सो इट इज फाउंड इन दी प्रोटीन्स. MCQ number 5. If Pseudomonas bacteria are supplied with the radioactively labeled cytosine after 24 hours incubation period, this cytosine would most likely be found in the cells. Carbohydrates, option number B DNA, option C lipids, वाटर और प्रोटीन्स. अगर हम साइटोसिन अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को इन द बैक्टीरियल कल्चर और मीडियम, तो साइटोसिन किसका पार्ट होगा? तो obviously it is the part of the DNA, because cytosine is the nitrogenous base and nitrogenous base is the part of the DNA. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6. If E. coli were grown in a medium containing the radioactive labeled isotope 32P, the 32P would be found in all of the following molecule of the cell except. अगर हम अब 32P रेडियोएक्टिव लेवल सप्लाई करते हैं, तो ये 32P किन किन पार्ट्स का हिस्सा होगा, लेकिन एक का हिस्सा नहीं होगा. तमाम का हिस्सा होगा. एटीपी का हिस्सा है, एटीपी में फास्फोरस मस्ट है. कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा हो सकता है या नहीं, डीएनए का हिस्सा हो सकता है या नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ दिस. तो इन तमाम के तमाम में एटीपी में भी फास्फोरस होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी फास्फोलिपिड्स होते हैं. तो फास्फोरस obviously इसमें लाजमी होगा. सो कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट आंसर. कार्बोहाइड्रेट्स हैज नो फॉस्फेट या नो फास्फोरस. The optimum pH of Thiobacillus bacteria, that is pH 3, is how much times more acids than the blood pH, that is 7. So it is 10,000 times more acidic than the pH of the blood.
The best definition of ATP is that it is a molecule that's stored for food use, a molecule that supplies energy to do work, a molecule stored for an energy reserve, a molecule used as a source of phosphate. So इसका best answer जो होगा वो option number C, a molecule stored for energy reserve. Which of the following is an organic molecule? Water. Option number B, oxygen. Styrofoam having the formula CH29SO3, iron oxide, and the Teflon. So the compound having carbon and hydrogen are the major components that are also called hydrocarbons. तो organic compound में इनमें से styrofoam है, styrofoam. Electrons move around the nucleus of an atom in the pathways called. अब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं वो कौन से ऑर्बिट्स में पाथ होते हैं? दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल्स. दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल्स. Which part of an element do not vary in number? Option A, electrons, protons. Option D, neutrons. All of these वेरी. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटॉन जो एलिमेंट वेरी नहीं करता? इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं क्योंकि कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, ले भी सकते हैं. न्यूट्रॉन वेरी करते हैं बिकॉज सम एटम हैव सेम electron or proton but different neutrons that are called the isotopes. So proton will never varies. Proton हमेशा जो एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं and protons lies in the nucleus of the atom. If a substance contains two or more elements of different types, it is considered as very simple. It is a compound. अगर different elements होंगे तो उसको compound कहेंगे. MCQ number 13. Bulk transport across cell membrane is accomplished by phagocytosis, pinocytosis, and extrusion. So bulk transport मतलब है कि the transport of the large molecules. That is, but all of these are responsible for the bulk transport across the cell membrane. Next MCQ is an atom that can donate electrons during a reaction is called. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन आयोनिक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एन इलेक्ट्रोलाइट. तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जिससे खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और दूसरा उसको गेन करते हैं. सो इट इज ए रिड्यूसिंग, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे. Next question. An anabolism and catabolism are chemically linked in the form of. Anabolism और catabolism दोनों लिंक करते हैं ASP की फॉर्म में, ADP की, ATP की या फास्फोडाइस्टर लिंकेज की फॉर्म में. नो, इट इज लिंक्ड विद द ATP. इसमें ATP किसी में यूज होती है, एनाबोलिज्म में ATP यूज होगी, जब कैटाबोलिज्म में ATP सिंथेसाइज होगी. Bonds in which atoms shed electrons are defined as bonds. वो bond जिसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं वो very simple है, it is a covalent bond. A hydrogen bond can form between adjacent to each other. अब हाइड्रोजन बॉन्ड किन दो एटम्स के दरमियान बनता है? It is a bond between two hydrogen atoms, or the bond between two oxygen atoms, or a hydrogen atom and an oxygen atom, negative charges. So it is a bond between hydrogen atom and an oxygen atom in case of water. Generally जो हम इसको memorize करते हैं that is for the word phone. ठीक है? So when hydrogen is bonded with the most electronegative element, it is the either it is the fluorine, oxygen or nitrogen, that is called the hydrogen bond. तो वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है. one water molecule is bonded with the other water molecule with the help of hydrogen bonding. So ये जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है. So option number C is the correct. A drug that prevents uric acid synthesis by inhibiting the enzyme xanthine oxidase. It is aspirin, option number A, allopurinol, colchicine, or the probenecid. So option number B is the correct. Allopurinol is used for the to prevent this uric acid synthesis.
Which of the following is required for crystallization and storage of the hormone insulin? So zinc is the metal that is used for the crystallization and storage of the hormone insulin. Question number 20. In a solution of NaCl and water, sodium chloride is a dash and the water is the dash. So NaCl is a solute and the water is a solvent. Option number C. Proteins can perform the function as enzymes. Antibodies are receptors. All of the above are correct. So option number D, A, B and C. एंजाइम्स भी होते हैं प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज भी होती हैं और रिसेप्टर्स भी होते हैं. RNA plays an important role in what biological process? RNA play important role in the replication. No. Lipid metabolism, protein synthesis or water transport. RNA play important role in the protein synthesis. Question number 23. Oxidation of which substance in the body yields the most calories? Glucose, glycogen. Option number C, protein or lipids. So lipids degradation or oxidation will yield maximum number of the ATPs. A solution with a pH of 2 has what more than the solution with a pH 8. What are the more? Less hydrogen, has more OH, 2 and the more has more hydrogen is less converted. So the solution with the pH 2 has more hydrogen than the solution with the pH 8. जिसके पास solution जिसके पास pH 2 होगा उसके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे as compared to the pH 8. DNA is a hereditary molecule that is composed of composition of the DNA में deoxyribose होगा, phosphate होगा और nitrogen bases होंगे. Option number A is correct. Deoxyribose, phosphate and nitrogen bases. तो basic unit of DNA is the nucleotide. ये तीनों जो components हैं ये nucleotide बनते हैं और फिर बहुत से nucleotide बनके DNA बनाते हैं. Question number 26. What is meant by the term DNA replication? DNA replication में जो DNA है वो अपनी कॉपी को डबल करता है. तो so it is the exact copying of the DNA code into two new molecules. The exact copying of DNA code into two DNA molecules. Next question. Milk is a deficient in which vitamin? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे विटामिन होते हैं. विटामिन सी इज मेनली फाउंड इन दी citrus fruits. मिल्क इज डेफिशिएंट फॉर विच मिनरल? मिल्क में कौन सा मिनरल नहीं होता? मिल्क में आयरन इज डेफिशिएंट. Synthesis of prostaglandin is inhibited by prostaglandin को inhibit किया जाता है by the use of drug that is called aspirin that is used to relieve from the pains. Phospholipid contains जब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की तो उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लाइसरॉल के साथ अटैच होते हैं. जब फास्फोलिपिड की बात करेंगे तो एक फैटी एसिड की जगह एक फास्फेट आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी, phospholipid contain 2 fatty acids and phosphate bound to the glycerol. Proteins are synthesized by linking amino acids with bonds. So peptide bond is the bond that is formed between the amino acids. Question number 32. The amino acids that accounts for disulfide bonds in the tertiary structure of protein is tyrosine, cysteine, glycine or the serine. So it is a cysteine. Which are the cholesterol esters that enter cells through the receptor-mediated endocytosis of lipoprotein hydrolysis? Endoplasmic reticulum, lysosomes, plasma membrane receptors, or mitochondria. So it is lysosomes. Lysosomes is the best answer. That is receptor-mediated endocytosis of the lipoprotein. Which of the following phospholipids is localized to a greater extent in the outer leaflet of the membrane lipid bilayer? हमें मालूम है कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर की इनर और एक्सटर्नल दोनों
लेयर्स में जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन है आउटर लीफलेट में कौन से फास्फोलिपिड्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज कोलिन फास्फोग्लिसराइड, इथेनोल अमाइन फास्फोग्लिसराइड्स, इनोसिटोल फास्फोग्लिसराइड्स और सीरीन फास्फोग्लिसराइड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज कोलिन फास्फोग्लिसराइड। फ्रक्टोज इज ए टाइप ऑफ, fructose is a disaccharide है, polysaccharide, monosaccharide amino acids, so it is a monosaccharide. Bond formation in the polysaccharides and the polypeptides is accompanied by the removal of the water molecule, that is the condensation reaction or dehydration synthesis reaction. The monomer units of polysaccharides such as the starch and cellulose is glucose is the monomer of the polysaccharide of the starch and the cellulose. Dehydration synthesis, that is the removal of water, is involved in the synthesis of all of the following except in तमाम में dehydration synthesis होगी लेकिन एक में नहीं होगी। अब इनमें कौन सा मोनोमर है? DNA is also need dehydration synthesis, proteins, polysaccharides and lipids. So monosaccharides never need the dehydration synthesis because it is a monomer. The primary structure of protein relates to its, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होती है वो मेनली डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पे। प्योर वाटर हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, प्योर वाटर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द एबिलिटी टू डिसॉल्व लिपिड्स। तो वाटर लिपिड्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता। Golgi complex, it synthesizes proteins, produces ATP, provide pathways for transporting chemicals, form glycoproteins. So इसका बेस्ट आंसर जो forms glycoproteins. कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं? जो कैरियर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं? Transport only one substance, yes. Transport more than one substance, substrate, or exchange one substance to another. Perform all of these functions. Perform all of these functions. Which of the following statement is correct about membrane cholesterol? मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्स रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर, उसका जो स्टेरॉइड पार्ट होता है वो रिजिड और प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। The absorption of intact proteins from the gut in the fetal and newborn animal takes place by it is by pinocytosis. Pinocytosis, that is a cell drinking process. All of the following processes occurs rapidly in the membrane lipid bilayer except membrane lipid bilayer में सारे के सारे प्रोसेस होते हैं लेकिन कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड। ट्रांस बाइलेयर का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में बाइलेयर की जो है ना वो फास्फोलिपिड की डिफ्यूजन नहीं होती। तो trans bilayer diffusion of phospholipids is not the process that occur in the membrane। बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। फ्लेक्सिंग ऑफ फेटी एसिड चेन होता है, लेटरल डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है और रोटेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स अराउंड द लॉन्ग एक्सिस। बल्कि ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स will never occur in the plasma membrane। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, is also called the semi-autonomous organelles। अब इसकी वजह क्या है कि इसके पास अपना डीएनए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? उसकी स्ट्रक्चर है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। The phenomena of osmosis is opposite to that of the diffusion। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपस में अपोजिट प्रोसेसेस हैं क्योंकि एक को मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, कि मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। The surface tension in intestinal lumen between fat droplets and aqueous medium is decreased by bile salts। bile salts की मदद से जो surface tension होती है वो decrease होती है, that help in the emulsification of the fats। Lipid bilayer is permeable to, इन तमाम में जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है that is the यूरिया के लिए it is permeable। Choose the list that goes from lightest to the heaviest। सबसे छोटा और सबसे बड़ा
इनमें कौन सा हो सकता है? प्रोटॉन नहीं, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, देन प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, सो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड. This is the ascending order from lowest to the highest. The strongest chemical bond between two atoms in solution are. तो strong bond जो होता है वो तमाम के तमाम bonds में covalent bond is the strongest bond. The macromolecules that are composed of carbon, hydrogen and oxygen in approximate ratio of 1 to 1, that are the carbohydrates. So polysaccharide is the best answer. In proteins, alpha helices and the beta splitter structures are associated with the primary structures, secondary structures, tertiary structures, or quaternary structures, are multi-protein complexes. So secondary structures are mainly concerned with the alpha helices or the beta structures of the proteins. Complementarity plays a major role in the structure of complementarity, means complementary sides or the complementary strands. So these are mainly involved in the DNA. Which one is the heaviest particulate component of the cell? तो सबसे heaviest component जो है वो nucleus है, because the presence of the chromosomes. What is the largest particulate of the cytoplasm? तो largest में mitochondria is the largest. The degradative processes are categorized under the heading of वो process में degradation होती है, तो degradation always occur in the catabolism. The exchange of material takes place in only by diffusion, only by ectotransport, only by pinocytosis. All of these ये तमाम का तमाम process exchange of material में help करते हैं. The average pH of urine is 6. The pH of blood is 7.4, which is the ratio when the ratio between H2CO3 carbonic acid and the sodium bicarbonate. तो इसकी ratio लें तो that is 1:20. Fatty acids can be transported into and out of the cell by the vesicular transport. The following points about microfilaments are true except microfilaments are the part of cytoskeleton. Microfilaments, they form cytoskeleton with microtubules. ठीक है. They provide support and shape. Yes. They form intercellular conducting channels. Next को देखते हैं. They are involved in muscle cell contraction. Yes. So option number 3 is not the function of the microfilaments. They form intercellular conducting channels. No. Bilayer is associated with option A proteins, DNA, RNA, complementary polysaccharide or phospholipids. So bilayer is associated with phospholipids. That is a part of the plasma membrane. Question number 64 is isomers are associated with carbohydrates, number 2 amino acids, number 3 nucleotides, number 4 RNA, number 5 fatty acids. अब इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमर्स पाए जाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स आर द बेस्ट चॉइस ऑफ आर द प्रोसेस ऑफ आइसोमरिज्म. सो ऑप्शन नंबर A, that is 1 and 2 both have the isomers. The following is the metabolic function of endoplasmic reticulum: RNA processing, fatty acid oxidation, synthesis of plasma proteins, or ATP synthesis. तो synthesis of plasma proteins. In biological membranes, integral proteins and lipids interact mainly by. अब integral proteins और lipids को आपस में interact कौन करता है? That's interacted by the hydrogen and electrostatic bond. Hydrogen bond and the electrostatic bond. Option number C. Question number 67. Plasma membrane is made up of. तो plasma membrane की mainly composition क्या है? It is a lipid bilayer, it's a protein bilayer, carbohydrate bilayer, or lipid single layer. It is the lipid bilayer. Select the subcellular components involved in the formation of ATP. So ATP mainly form in the mitochondria, that is called the powerhouse of cell. Mitochondrial DNA is maternal inherited,
paternal inherited और none is mitochondrial जो DNA है that is contributed from the mother side, so it is the maternal inherited. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस हेड इन्वॉल्व होता है, जबकि जो एग होता है वो कंप्लीट इन्वॉल्व होता है, उसको साइटोप्लाज्म जो कंटेंट्स होते हैं that are mainly inherited by the egg side. So mitochondria, that is a part of the cytoplasm, it is inherited by the mother side, so it is a maternal inherited. All of the following statements about the nucleus are true except, इन तमाम की तमाम स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियस के लिए ठीक नहीं है? तो outer nuclear membrane is connected to endoplasmic reticulum, yes. It is a site of storage of genetic material, yes. Nucleus is surrounded by bilayer membrane. Next को देख लेते हैं, outer and inner membrane of the nucleus are connected at the nuclear pore, yes, it is correct. So option number C is not correct. Nucleus is surrounded by not a bilayer membrane. Golgi apparatus is present in all of the following except, Golgi bodies सब में होते हैं, किस में नहीं होते? RBCs में Golgi bodies नहीं होती, कोई RNA भी RBCs में नहीं होती. Enzymes catalyzing electron transport are mainly present in the indoor mitochondrial membrane. In mammalian cells, a ribosomal RNA is produced mainly in the nucleolus, at the site of the synthesis of the ribosomes. Mature erythrocytes do not contain pyridine nucleotide. Peroxisome arises from Golgi membrane, lysosomes, mitochondria, pre-existing peroxisome, and budding off from the smooth endocardiculum. So pre-existing peroxisomes and the budding off from the smooth endocardiculum. Option number D. Sodium potassium ATPase is the marker enzyme for the plasma membrane. The digestive enzyme of cellular compounds are found confined to digestive enzyme mainly found in the lysosomes. Genetic information of nuclear DNA is transmitted to the site of protein synthesis by the जो मैसेज आता है DNA से that is through the messenger RNA. This process is called the transcription. So option number B, messenger RNA, is the message that is conveyed, transmitted from the DNA to the cytoplasm for the process of the protein synthesis. The most widely used method for determining the purity of a protein is protein को purity का जो method हम इस्तेमाल करते हैं that is polyacrylamide gel electrophoresis. Which of the following is an example of epimers? इसमें option number A, mannose and glucose, glucose and ribose, galactose and mannose, so glucose and galactose. Option number D is correct. Glucose and the galactose are the example of the epimers. They have OH group at different sites. That's all about the introductory MCQs of the biochemistry. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉपिक वाइज जो MCQs होंगे बायोकेमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स में, इसमें जनरल बेसिक्स एटम के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स.